discuss about some more problem, which is like our this fxy function. If this is in terms of suppose rational integer, okay, algebraic function. So suppose fxy is of the form, suppose x to the power m and y to the power n. Okay, so suppose if we consider this is this type, or any rational, or you can take any rational integer, algebraic function of x and y. Okay, so if we take this type of function, then what is the particular integral? Okay, so suppose if we have a problem which is solve, suppose del 3z over del x cube minus del 3z over del y cube, that equals to x cube y cube. Okay, suppose if we take this type of simple example, and we try to solve what is the solution of this partial differential equation. Okay, so here first of all we calculate what is our complementary function of this partial differential equation. So before that, we find auxiliary equation. So what is auxiliary equation? So here the auxiliary equation is this is m cube minus 1, that equals to 0. So this implies the roots are the cube roots are unity. So this means 1 omega omega square. Okay, so therefore our complementary function, that equals to some function y plus mx, that is y plus 1 into x, that is x, plus phi 2 y plus omega x, say phi 3 y plus omega square x. Okay, and here you phi 1, phi 2, and phi 3 are basically any arbitrary functions. Okay, so these are the arbitrary functions. And what is your omega? So omega is cube roots of unity. Okay, so here this is your complementary function. Okay, so now we are interested to find what is the particular integral. Okay, so here what is the particular integral? So particular integral, that equals to you know that this is 1 over f of this function of d over d1, okay, of this function fxy. Okay, but here your function is your polynomial form, so this becomes, you can write what is the function of d and dq. So you can write this function is d cube minus d1 cube of z, that equals to function of fxy. Okay, and this fxy equals to this thing. So here this d cube minus d1 cube, this of function, and of function is x cube and y cube. So here in similar way in which your ordinary differential equation, you can uh, do this. If we take this d higher power is common, so here d and d1 has the same higher power. So this means we take here d cube is common. This means 1 minus d1 cube by d cube. Okay, so if we take this term, so your, and now this term is in your rotated term, that equals to minus 1 power, and then you expand by binomial expansion. So you can get 1 over d cube, and this becomes 1 minus d1 cube over d cube to the power minus 1 of this function. That function is x cube y cube. Okay, so you have to operate this with on this function x cube and y cube. So this equals to 1 upon d cube. What is the expansion of this? This becomes a plus x, means d1
dq, and plus x square over factorial 2 and so on. And here this highest term of this y is 3 here, एंड D1 की जो है, सो दिस मीन्स इसके जो हायर पावर पे आप जाओगे वो हमारे 6 किसी काम के नहीं, वो सभी हमारे 0 होते जाएंगे। ओके, तो कोई सेंस नहीं है हायर ऑर्डर को हमें देने के लिए। सो दिस बिकम्स एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब। सो नाउ this equals to 1 over d cube, and here d cube, and if you multiply this thing, this becomes x cube y cube of first one, and here this term is 1 cube plus this plus this becomes 1 over d cube and derivative of that. Okay, what is derivative of third derivative of this function with respect to y? This is what is your d1. D1 is del over del y. Okay, d1 is del over del y. Okay, so now if we differentiate partially this function 3 times, the first time this is 3x square. Okay, the second time this is 6y, then x cube, then third time this is 6 of x cube. Okay, so this means that this function is 6 of x cube. If you operate that thing, over d cube of x cube y cube, and here y to 1 by mm, 4 by 4, then 5 by 5, and then 6 by 6. Okay, so this is 60 here. 6 by 6. 60. So 3 by 60 means 3 by 20. Okay, 1 by 20. So this becomes 1 by 20 x to the power 6. Okay, so now we operate this term. So here this equals to, if you operate here, so this is x to the power 6, x to the power 6 y cube. If we integrate with respect to x 3 times, and denominator 4, 5 into 6, so that becomes 120 here. So this becomes 120 plus here integrate x to the power 6 3 times, this is x to the power 9, denominator 20 into 7, 8 and 9. Okay, so this is your final result. Okay, so after multiplying this you get the result. Okay, so this equals to x to the power 6 y cube over 120 plus this is x to the power 9, and if you multiply this, this equals to this thing. Okay, so now your complete solution, the general solution is z, and z equals to cf plus pi, and this portion is your pi, this is your pi, and this is your cf. So for that you can find easily what is the general solution of this partial differential equation. Okay, so in next page, if we take
the general method of finding the particular integral. So in next page we consider general method of finding particular integral of this d1 of z that equals to function of fxy. Okay, so here we know that if our particular integral, if of type, suppose if we factorize that function f d1, so suppose if we get, suppose the factors are in this form, d minus this thing, d minus suppose m2 d2, and suppose there are n factor of, so this becomes of type this. Okay, so this is 1 1 1 1 d1. Okay, so d1 of this, okay, of this function xy. So what is the general method? So here there are basically two cases when what is the value of this factor d minus d1 of this. Okay, so we solve this by formula, and this formula is this function of x of y, and here y we take c minus mx. Okay, if we take this m1, so or in general we take a simple m here. Okay, so we take m here, so we can write here m. Okay, and this dx, where what is your c is basically y plus mx. And the second case, when this sign is plus here, so d plus m d1 of this function, so this equals to function of x c plus mx. Okay, so if this sign is plus, so we can write here plus, we minus, so we can write here minus of dx, where the c is y minus mx. Okay, so these are the general method. So if we have a problem of type this, d square minus 4 d1 square of z, that equals to say 4x over y square minus y over x square. Okay, so in this case, what is the auxiliary equation? So what is the auxiliary equation is? Auxiliary equation is m square minus 4, that equals to 0. So this implies what is the value of m here? Plus 2 and minus 2. So therefore, the complementary function. So you can write this is y1 of y plus mx. So this becomes 2x, and y, this is minus 2x. Okay, so this is your complementary function, and here phi1 and phi2 are arbitrary function. Okay, so here we are basically interested to find what is the particular integral. So our particular integral, that equals to 1 over, if we factorize this, so this is d plus 2d1 a plus b, and this is a minus b. Okay, of this function over, apply over this fxy, and fxy is 4x over y square y minus x square. Okay, so here we use the first formula. This is, we operate this thing, then this thing. Okay, so this equals to 1 over d plus d1. This operate this and operate 1 over d minus 2d1 with this function, and this function is this is 4x over y square minus y by x square. Okay, so here this is a d minus something. To d minus something, to we use here first formula, and you can write this thing equals to 1 over d plus 2d1, and this is right in the form of function of this. Here we simply change this y, this change y as c minus mx. Okay, so here we can write here 4x, this is 4x, and here this y is c minus m is 2 here, so c minus 2x. Okay, so we can write this is c minus 2x minus c minus 2x square, and you have integrate that function. Okay, and here what is c here? So c equals to y plus 2x.
Okay, so you integrate this thing and then putting the value in the terms of y. Okay, so this equals to 1 over d plus 2d1, and if we integrate this term, so this is basically log of c minus 2x, okay, c minus 2x, and plus c over, this is x, c minus 2x plus c over x plus 2 log x. Okay, so if you integrate this term by term, so you get this thing. Okay, so now then again we put here what is the value of c here. So on c we put here, this is y plus 2x here. Okay, so this function is reduced into in this pi, that equals to 1 over d plus 2d1, and this operate log of y, and if we putting back this c in terms of y, so we get this term as like this. And then here, this is function of fxy, and then here, if we operate this d plus 2d1, so here we integrate this function on putting y equals to, this is plus sign, so we can write something arbitrary constant, say another c1, so we can write log of c1 plus this is 2x. Okay, so this y by y, this is 1, plus this is 2x over y, and y is c1 plus 2x, and here y is c1 plus 2x, so c1 plus 2x over x, and here this x is cancelled, so this is 2, and here 2 log x, this is 2 log x, this dx. Okay, so here you can solve this function, and here what is the value of c1? So c1 is y minus mx, that is 2x. Okay, so this equals to x log c1 plus 2x, and here this is 5x. Okay, this is 1 1 2 2 4, and here, okay, so this is c1 of log x, 2x log x minus 2x. So this equals to x log, and c1 plus this equals to, again we put c1 in terms of y. So this is y log x plus 3x, because we put here this thing. Okay, so what is your z here? So general solution is equals to, the first one is complementary function. Okay, and second one is your particular integral, and particular integral is x log y log x प्लस 3x. ओके, सो चेक कर लीजिएगा कहीं कुछ प्लस माइनस में कुछ इंटीग्रल में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप ठीक कर लेंगे. बेसिकली प्रोसीजर यही है. ओके, तो ये हमारे हैं कि कुछ जनरल मैथड्स अगर हो तो आप इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं. ओके, और भी है हमारे पास कुछ और भी मेन फॉर्मूले हैं जो कि काफी यूज होते हैं. तो हम नेक्स्ट पेज पे हम उन्हें कर लें. ओके, तो नेक्स्ट पेज, on next page there is a non-homogeneous linear partial differential equation with constant coefficients. और यदि हमारे पास जो फैक्टर हो जो प्रोडक्ट में है वो दैट इज ऑफ लीनियर फैक्टर, तो हम कैसे करेंगे उसके लिए फॉर्मूला क्या है. सबके लिए डेरिवेशन है बट हम डेरिवेशन बहुत नहीं कराएंगे. ठीक, सिर्फ हम फॉर्मूले देते जा रहे हैं, आप उसे नोट कर लें और प्रैक्टिस करें प्रॉब्लम्स की. एग्जाम में भी डेरिवेशन जो डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं वो नहीं आएंगे. सो non-homogeneous linear partial differential equation with constant coefficients. Okay, so here we consider this function that is d and u1 of z that equals to function of
fxy, and when this function, that is d and d1, d and d1, this can be expressed, this can be expressed as product of factors linear in, which is d and d1. Okay, so then we have two cases. First one corresponding to each non-repeated factors. Okay, that is if we write in this form, okay, our factor is suppose in this form, then the complementary part, then the part of CF is taken as e to the power, which is cx over b, okay, and phi of this by plus ax, if this b is non-zero, if b, this d by dx term, b is non-zero. Okay, and second corresponding to repeated, this is for non-repeated, this is for repeated, for repeated factor, which is of type this, suppose this is square or this is cube, this type of factor, suppose this power of r. Okay, so the part of complementary function is taken as e to the power, this is c of x b, okay, and here this is repeated root, so phi 1 by plus ax plus x time by plus ax up to x to the power r minus 1 due to this factor is r. So this phi r by plus ax. So this is your formula. Okay, and in addition to this, if suppose if any function of type if we take this type of factor, suppose if we take a d1, suppose if we take minus sign here, so a d1 plus, because uh, this factor, this factor, you can write here, this is bd minus ad1 minus c of, suppose z equals to 0. Okay, so this means you can write here, this is ad1 plus c minus d bd of z, this equals to 0. Okay, so this means this is equals to a of d1 minus of bd minus of minus c, okay, of this equals to of this z that equals to 0. Even we could write this is rearranging this term. Okay, so for that, for this reason, you have this is d means d1 means this is a function of del over del y. So you can write your z complementary function is in the form of this minus of the c of y, this is c of x था d के लिए, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं c of y over this a. ओके, इसका डेरिवेशन है पूरा, पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दे रहे हैं. दिस इज अंडर फंक्शन psi and which is function of by plus ax. ओके, सो अगर इस फॉर्म में लिखते हैं आप, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा z वो इस फॉर्म में होगा, और अगर वैसे लिखा आपने तो उस फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके, सो दिस मीन्स आप ये इसे कंक्लूड ये कर सकते हो कि यदि हमारा ये जो फैक्टर है दैट इज बी डी माइनस ए डी वन माइनस सी, ओके, ऑफ z इक्वल्स टू 0, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट हो सकता है कि आपका जो फैक्टर हो सिंपल d माइनस कॉन्स्टेंट हो या d1 माइनस कॉन्स्टेंट हो, एंड दिस मीन्स कि आपका जो b टर्म जो है, अगर हमारा d1 माइनस
समथिंग, मान लो ये फैक्टर D1 - 3 का फैक्टर आ जा रहा है। ओके, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस में हमारा D का जो कोफिशिएंट है दैट इक्वल्स टू 0, जिसमें B इक्वल्स टू 0, तो B इक्वल्स टू 0 करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, B इक्वल्स टू 0 करने पे ये हमारा इन्फिनिटी टर्म आ जाएगा। ओके, तो इस केस हमारा डिफाइन नहीं होगा, तो उस केस को आप क्या करेंगे, D1 के फॉर्म में लेके चलेंगे। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे B हमारा टर्म नहीं आ रहा, तो इस चीज को यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, इफ ए एंड बी बोथ आर नॉन जीरो तब तो हमारा ये भी होगा और ये भी होगा, लेकिन जब हमारा इस तरह की फैक्टर आ जाए, या फिर हमारा D-5 या D+5 इस तरह का फैक्टर आ जाए जहाँ D का कोएफिशिएंट जीरो है, मीन्स ए बी मेरा जीरो है, D1 मीन्स मेरा क्या, ए का कोएफिशिएंट जीरो है, तो हम ये फॉर्मूला फिर नहीं लगाएंगे। ओके, यहाँ पे हम क्या ये फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। तो उस केसेस के लिए हमारे पास क्या चीजें हैं, तो उस केस के लिए हम ये है, हमारे पास जो फॉर्मूला है ये है कि अगर ये चीजें हों, देन z इक्वल्स टू e टू द पावर c बाई b into x, मीन्स ये फॉर्म हम लिख रहे हैं, पाई ऑफ by प्लस ax इफ आवर b इज नॉन जीरो, इफ आवर b अगर मेरा जीरो नहीं है तो हम ये फॉर्मूला लिखेंगे, और यदि b मेरा जीरो है तो हम इस फॉर्मूले पे आ जाएंगे, दैट इज z इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस, ओके, माइनस c by a of y, and this is okay, so we can write if a is not equal to zero, तो हम थोड़ा सा इसको चेंज करें, if a is not equal to zero, अगर a मेरा नॉन जीरो है तब के केस में, तो दिस minus c over a of y and say any function psi, this is by plus ax। okay, so if b is non zero तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, b मींस कि हमारा d का कोफिशिएंट है, और अगर हमारा a का कोफिशिएंट है दैट इज d1 समथिंग है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, और इसके साथ ही साथ एक और है मेन, कि हम ट्रायल फंक्शन जो लेते हैं। ओके, so in next page one more remark, so next page can write, next page when our f, which is a function of d and d1, cannot be resolved into linear factor। ओके, जो लीनियर फैक्टर्स में ना हो पा रहे हो, तो उस केस में हम क्या करें, तो इन सच केस वी अप्लाई ट्रायल सॉल्यूशन, एंड दिस ट्रायल सॉल्यूशन इज a e to the power hx plus ky, and then solve it, then solve। ओके, तो ये चीजें हम करेंगे कि कैसे करना है। तो सबसे पहले तो जो भी पिछला जो भी फॉर्मूले दिए उसके बेस्ड एक प्रॉब्लम कर लें, एंड देन नेक्स्ट हम इस पे कर लेते हैं। ओके, तो if you have solved this d square minus d1 square plus d minus d1 on this z equals to 0, okay, then the given partial differential equation, this can be written as linear factors, as you can factorize this term like this thing, and this is a homogeneous, so that's why you here what is your fxy, fxy is 0। okay, so this means particular integral is 0 here। okay, what is your cf here, so your cf is z equals to you see that here so if we take first one, so here this d minus d1, okay, so what is the value of a and b? okay, so if we compare with our formula is a d1 plus minus a d1 minus bd, okay, so I think our formula is like this, I think bd1 bd minus a d1 minus c
दैट इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पे आप कंपेयर कर लें फर्स्ट वन में हम देखें तो इसमें हमारा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b हियर। तो हियर c इज 0, ओके, c इज 0, तो वी कैन राइट आवर solution is e to the power c is 0, 0 into x we can write in this form, okay, so 0 x 0 into x upon what is the value of b here, this is b equals to 1, then pi 1, this is 1 into y, 1 into x, plus, and for second if we come here, so e to the power, this is minus of 1 into x over 1, pi 2, this is 1 into y plus minus 1 into x. Okay, where phi 1 and phi 2 are the arbitrary function. So you can write directly what is the complementary function, what is the solution. So this becomes y plus x, e to the power minus x, phi 2, this is y minus x. Okay, so where phi 1 and phi 2, these are arbitrary function. Okay, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इसमें कंपेयर कर लिया what is the value of a here and what is the value of b here and what is the value of c here. Okay, so for that you can find easily. Okay, तो इस तरह से आप कर सकते हो। सपोज एक प्रॉब्लम और लिया हमने और इसको लिखें सॉल्व d माइनस d1 स्क्वायर ऑफ z, और ओके इससे पहले एक इस तरह की फॉर्म में एक एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज t plus s plus q this equals to 0. This means you can write this is del 2z over del y square. What is s is del 2 over del x del y, and what is q is del z over del y. Either this form or this form. Okay, so या फिर आप इसे लिख सकते हो d1 square plus d1 plus d1 of z that equals to 0. Or you can write d1 common, so this is d1 plus d1, oh this is d1 common, so d plus d1, this becomes d plus d1 plus 1 of z equals to 0. Okay, so in this case what is your required solution? तो इसको d1 को इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0 into d, मींस d1 को हम लिख रहे हैं 0 into d plus 1. ओके, सो वैसे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है मेरा, यहाँ पे माइनस है तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे माइनस ऑफ माइनस 1 इंटू माइनस ऑफ माइनस 1 इंटू d1 एंड माइनस दिस इज c 0, so this becomes d1, and second one if this form अगर हम लिखें तो this is 1 into d, okay, minus of minus 1 into d1 in this form, and what is your c is 1 here, so this becomes minus of minus 1 of z equals to 0. Okay, so here you can compare this with b d minus a d1 minus c. Okay, so here b equals to a equals to c equals to this term. So what is your general solution? So z equals to here e to the power 0x over minus 1 and your function phi 1 0 into y plus minus 1 into x, this first part, and second part e to the power, second part we can write here plus e to the power minus 1 into x by 1 and phi 2 1 of y minus 1 of x. Okay, so this equals to phi 1 of minus x and e to the power minus x phi 2 y minus x. So this is your solution. Okay, तो इस तरह से आप डायरेक्ट अगर लीनियर में अगर वो आपके हो जाते हैं तो उस केस में आप इससे कंपेयर कर लें और डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं CF फैक्टर। और पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए आपको मालूम ही है, ये फॉर्मूला दिया ही है कि d प्लस के लिए क्या होगा, d माइनस के लिए क्या होगा, तो उस तरह से आप उसे
कर सकते हैं। ओके, जहाँ पे हमारा लीनियर फैक्टर हो ही ना, उस केस में हम क्या करें? उस केस के लिए हमारे पास जनरल है कि ये हम मेथड लेके चलें और सॉल्यूशन जो होगा दैट इज द समेशन ऑफ दिस फॉर्म। इफ वी राइट हियर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ h इन टर्म्स ऑफ k और k इन टर्म्स ऑफ h। नेक्स्ट पेज हम इस पे एक प्रॉब्लम लेके कर लें। ओके, सो नेक्स्ट पेज we have solved this d minus d1 square z equals to 0. Okay, so here you d minus d1 square, this is not linear. Okay, so then we can apply our next formula, and which is we assume that our z is a with any constant hx plus ky. Okay, this will be the trial solution. This will be a trial solution of given partial differential equation. So then, what is the value of d of z and d1 square of z? What is of dz? Dz that equals to ah of e to the power hx plus ky, and what is the value of d1 squared? Means we differentiate this partially with respect to y 2 times. This equals to a and then k square e to the power hx plus ky. Then putting these values in our original equation, so putting these value in the given partial differential equation, so we get a h e to the power hx plus ky minus ak square e to the power hs plus ky, that equals to 0. So this implies if you solve this, you can find hx plus ky that equals to 0. Okay, so here this is exponential term, this never 0 for any value of x and y. So this implies you can write here this h of k square into a, of course, into a, that equals to 0. If a equals to 0, so z equals to 0, this is a trivial solution. So here this implies h minus k square equals to 0, since a is not equals to 0 for non-trivial solution. Okay, so this implies you get h equals to k square. Okay, so by replacing here h by k square, so the your general solution is, so now we're replacing h by k square. So the most general solution of the given partial differential equation is z equals to a e to the power this k square x plus ky. Okay, and here k with any arbitrary number, so we can write here the summation of that. Okay, so where a and k are arbitrary constant. सर यार समेशन लिया है। समेशन ये लिया है कि इसके जो जितने भी सोल्यूशन होंगे उनका जो हमारा जो लीनियर सम होगा वो भी आपके सोल्यूशन होंगे इसके। ओके, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है ना, तो इनका कोई भी आप लीनियर कॉम्बिनेशन भी इसका आल्सो सोल्यूशन होगा, तो ये भी इसका सोल्यूशन होगा। तो हमने लिखा मोस्ट जनरल सोल्यूशन। आइदर वे आप लिख सकते हो सिंपल कि इसका जो सोल्यूशन है दैट इक्वल्स टू a e to the power k square x plus ky. This is the solution of your this type of homogeneous partial linear differential equation. Okay, समेशन इसलिए कर लिया कि इसका जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन के भी जो भी सोल्यूशन होंगे उनका जो पार्शियल का जो सम करेंगे वो भी इनका सोल्यूशन मेरा एग्जिस्ट करता ही है। तो उस केस में आप इसको ले सकते हो, अदरवाइज ये तो सोल्यूशन होगा ही। तो ये तो हमने इसीलिए लिखा मोस्ट जनरल सोल्यूशन। ओके, दिस इज योर मेन सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन की फॉर्म में भी आप इसे लिख सकते हो। तो ओके, तो ये सारे आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में हैं। कुछ हम न्यूमेरिकल आपको दे देते हैं, उसको आप खुद से ट्राई कर सकते हो और ट्राई करिए, इसमें बिल्कुल सिंपल है।
ओके, तो नेक्स्ट पेज पे हम कुछ न्यूमेरिकल देते हैं आपको. Suppose if we have d square minus d1 of that, ठीक उसका रिवर्स ले लिया हमने और यहाँ हमने एफ एक्स वाई को समथिंग ये ले लिया. हम्म, तो यहाँ पे इसको चलिए हम अच्छा थोड़ा सा हम कर देते हैं कि ये जो है ये फैक्टर जो है दिस फैक्टर कैन नॉट बी रिजॉल्व इनटू लीनियर पार्ट. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हियर this d square minus d1, this cannot resolve into linear factors of this d and d1. So hence to find complementary function, तो हम कंसीडर यहाँ कर सकते हैं we consider this d square minus d1 of z equals to 0. Suppose for complementary function के लिए हमने इसको 0 कर लिया. ओके, और यहाँ पे हम क्या किया, let us try a solution. So trial solution हमने ले लिया. This is of equation 1 basically. This is z equals to a hx plus ky, and here we can find what is the value of d square z. So d square z equals to a h square to the power hx plus ky, and what is d1 z? This is a of k e to the power hx plus ky. Okay, so this implies a common then h square minus k e to the power hx plus ky. On putting these values in question number 1, so you get here from h square minus k equals to 0. So this equals to k equals to h square. Okay, so when k equals to h square, then you're putting k equals to h square in your solution. So what is your complementary function? This equals to a of e to the power hx and k equals to h square y. So this is your complementary function. Okay, so what is your general particular solution? So particular solution is equals to 1 over d square minus d1, okay, of this function. This function is 2y minus h square. So for that, you know that the highest power is d square, so you take d square is common, and this is 1 minus d1 over d square of this function 2y minus x square. So this equals to d square, and this is the binomial expansion of this function, and the expansion of binomial expansion is equals to 1 over d square, and here 1 plus d1 over d square. Okay, so here d1 is del over del y, or here the first order degree here y. Okay, so d second means d square has no sense. Okay, so you can d1 square over 2 degree of 4 and so on. Okay, this is 2y minus x square. But this d1 square, if you operate this term, so this equals to 0. So that's why we have only 1 over d square, and here if we 2y minus x square multiply 1, this is 2y minus x square plus 1 d1 of d square of this 2y minus x square, and remaining are 0, so that's why. Okay, so here if we integrate or differentiate this term, so this is only 2 here. Okay, so if we d1 of this is 2, and d1 of that equals to 0, this is only 2, and then 1 by d square means 2 of d square. So if we integrate this first time, so this means 2x, and then 2x square by 2. This is only x square here. Okay, so here we get x square. So this equals to 1 by d square, and this is 2y minus x square, plus this is x square. So x square and x square is cancelled out because this term is x square. So this is 2y, okay, and if we integrate this, so this becomes 1 times this is 2 of y square by 2, and then integrate again, so this is y cube by 3. So this equals to
Okay, with respect to x है. Okay, sorry, no, not y. This is 1 by d square. Okay, of 2y. So if we differentiate first time or integrate first time, this is 2yx and then x square. So this equals to okay, x square by 2. So 2 and 2 are cancelled out to 2y x square by 2. So this is only x square y. So this is particular integral in this equation is x square y, and CF part is this thing. Okay, you can write this or you can write a summation of this. Both are same. Okay, so then the solution is this plus this. Okay, where a with any arbitrary a and h are a and h are arbitrary कांस्टेंट. ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हैं. एक लास्ट इसमें एक प्रॉब्लम और है, और ड्यू टू 5 मिनट्स ही बचे हैं, तो प्रॉब्लम दे रहे हैं, इसको खुद से जरा करने की कोशिश करें. तो नेक्स्ट पेज. solve this 4d square 3d d1 square minus d1 offset that equals to 3 e to the power 3 plus 2y by 2. ओके, तो ये आपका प्रॉब्लम है, इसको खुद से करने की कोशिश करें. और इसमें वो सारे फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं जो आपको बताए गए हैं. और ओके, इसका इसकी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आप निकाल लेंगे. इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो आ रहा है -2y e टू द पावर x प्लस 2y बाई 2. ओके, पार्टिकुलर इंटीग्रल ये है. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आप इसका निकाल ही लेंगे. तो इसको सॉल्व कर लें. तो आज इतना ही करते हैं. और नेक्स्ट टर्म पे फिर कल जो है हम आगे हम आपके इस पे जो है क्लेरेट इक्वेशंस जो है हमारे, और हमारे कार्पेट इक्वेशंस जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में, हम उसको कल डिस्कस करें. ठीक है सर? आज इतना ही. सर हमारी क्लासेस कब तक चलेंगी ये? बस इस वीक लास्ट सैटरडे तक. ओके सर. सैटरडे तक आपका कोर्स खत्म हो जाएगा. ठीक है सर, जितना पढ़ाए उसी में से आएगा ना सर? उसी में से आएगा सर, उसी में से आएगा. उससे बाहर कुछ नहीं आएगा. जितना हमने आपको ऑनलाइन हम आपके साथ रहे हैं, जो भी चीजें हम डिस्कस किया है, सारी चीजें उसी में से आएंगी. और ओपन बुक है, ओपन नोट्स है. सर असाइनमेंट जैसा सर क्वेश्चन ना आ जाए सर? नहीं आएगा. यस सर, बहुत दिक्कत होता है. असाइनमेंट अलग है. इसमें अगर आप सीरियसली अगर आपने क्लासेस की हैं और नोट्स बनाए हैं, हम आपको पूरे बता दे रहे हैं. अगर आपने क्लासेस की है, नहीं भी की है, नोट्स अगर आपके पास हैं, तो आप आसानी से 70 मार्क्स से प्रॉब्लम है 60 तक आप आराम से पा जाओगे. ठीक है, असाइनमेंट की तरह या फिर जो हम आपको प्रॉब्लम सेट दे रहे हैं, उस तरह की प्रॉब्लम, उस तरह की चीजें नहीं आनी है, क्योंकि आपको 4 ही क्वेश्चंस करने हैं और 4 ही घंटे के अंदर करने हैं. तो ऐसे प्रॉब्लम हम नहीं देंगे जिसमें आप घंटों लगे रहो. ठीक है, बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम होगी. डेरिवेशन होंगे. डेरिवेशन में आपको कुछ सोचना ही नहीं, आपके पास तो नोट्स पड़ा हुआ है. डेरिवेशन देना मतलब कि आपको एक तरह से हमने फ्री का नंबर आपके पास है. अगर हम आपसे टाइम तो ढूंढने के लिए चाहिए होता है. टाइम ढूंढना क्या, अब आपके पास सारी चीज नोट्स अगर है ही है तो आप सब लिख ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. हाँ, लेकिन बस हमारा छोटा सा एक लेकिन है, हाँ, कि हर स्टूडेंट 70 मार्क्स भी नहीं पा पाएगा. उसके लिए उसको पढ़ना भी जरूरी है. तो हाँ, 60 आप आ जाओ, लेकिन 70 के लिए आपको
पूरा कंसेप्ट होना जरूरी है। बस मेरा इतना ही कहना है सर। बस पास होना है सर हम लोग को। आप तो अगर पास होना है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो आप बड़े आराम से पास हो जाओगे। जिन स्टूडेंट्स को 60 के आसपास चाहिए 70 में, वो नोट्स और बाकी चीजें अगर उनके पास हैं तो बड़े आराम से वो पा सकते हैं। और जिनको वाकई 70 में 70 पाना है, उनको पूरी कंसेप्ट उनके पास होना चाहिए, तभी वो 70 में 70 पाए। क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है सब कुछ जानने वाला और थोड़ा कम जानने वाला, तो कुछ एक पैमाना होना चाहिए जिससे कि जो सब बच्चा मेहनती बच्चा है जो सब कुछ करता है उसमें, और जो हालांकि सभी लोग कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन कहने के लिए मान लीजिए कुछ नहीं करता है, ठीक है, तो दोनों के बीच में कुछ एक लाइन होनी चाहिए, उसके लिए वो है। तो अगर आप 60 तक अगर आप खुश हैं तो कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप उससे ज्यादा लगता है आपको, तो आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये बिल्कुल निश्चित रहे कि असाइनमेंट की तरफ प्रॉब्लम आनी है या फिर इस तरह की चीजें, प्रॉब्लम बहुत ही आसान है। सर सर नोट्स पढ़ने के लिए भी हमें टाइम चाहिए होगा, तो एग्जाम के पहले थोड़ा सा गैप भी दिया जाए, मतलब एग्जाम स्टार्ट होने से पहले दिलवा दीजिए। बिकॉज अगर 14 क्लासेस चलती रहेंगी तो सर हम लोग सेल्फ स्टडी कब करेंगे? सर अभी हम लोग पूरे टाइम सर पेपर की डेट, एग्जाम की जो डेट है उसका कुछ बता दीजिए कब से, मतलब सब 17 से होंगी, 17 के आगे से। सर 17 से अगर एग्जाम स्टार्ट होंगे, 14 तक क्लासेस चलेंगे, हम लोग सर कैसे मैनेज करेंगे? सारा दिन क्लासेस चलती हैं, फिर असाइनमेंट भी रहते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, जब आपके रेगुलर ऑफलाइन एग्जामिनेशन होते हैं तो आपको एग्जामिनेशन में भी गैप मिलता है, और आपको जो है प्रिपरेटरी लीव भी मिलती है। बट जब ऑनलाइन सिस्टम है तो आपको एग्जामिनेशन में भी गैप जो है बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ओपन बुक एग्जामिनेशन है। दिस मींस कि आपके पास सारी किताबें, सारी चीजें, सारे मटेरियल आपके पास हैं। सर सब कुछ है, उन सब के बाद में हमको पढ़ना भी तो है। पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा ना मटेरियल में कहाँ पे क्या चीजें हैं। बिल्कुल प्रीवियस ईयर मटेरियल तो असाइन भी था, फिर भी नहीं हो रहे थे वो। टाइम ही नहीं बिल्कुल मिल पा रहा, हम लोग असाइनमेंट में ही लगे रहते हैं, फिर सारा दिन क्लासेस रहती हैं, सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही हम लोगों की। बात सर 4 डेज तो मिलेंगे। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ कि आपकी क्लासेस जो है 13 तक चलेंगी और 4-5 डेज आपको मिलेंगे। 4-5 डेज में आपको पूरे समय है, 4-5 डेज काफी होते हैं, पूरे आपके पास से ही होगा या उसके बाद से? 17 के बाद ही से होगा, 17 के बाद से, ठीक है। तो आपके पास 4-5 दिन का समय है, 4-5 दिन के समय में आप सारी चीजों को एक पेपर ले लीजिए, सारी चीजें उसके पढ़ लीजिए, क्या क्या पढ़ाया गया है, सारी चीजें आपको देख लीजिए, सारे नोट्स मटेरियल रख लीजिए, और कर लीजिए। बहुत प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, आपको डिस्कस करना है ये चीज की ऐसी वैसी चीजें हैं तो कहने के लिए है, लेकिन आप खुद समझते हो कि ये आपके पास सफिशिएंट टाइम है ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए। ओपन बुक एग्जामिनेशन और सर मतलब हम लोग ये जो असाइनमेंट के क्वेश्चन थे, अगर आपके पास टाइम हो, मतलब कोर्स थोड़ा पहले अगर खत्म हो जाए तो उसके क्वेश्चन एक बार अगर। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन अभी तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही मेरे ख्याल से 3-4 लेक्चर तो चलेंगे, तो सैटरडे तक तो आपका कोर्स चलेगा, उसके बाद आप जब कहोगे तब हम सारे करा देंगे। सैटरडे तक तो कोर्स ही चलेगा। सर ये जितना पढ़ाया गया है इतना ही हमारा कंप्लीट सिलेबस है? बिल्कुल, जितना भी पढ़ाया गया नहीं, सैटरडे तक पढ़ाया जाएगा उतना ही आपका कंप्लीट है। बिल्कुल, जितनी चीजें आपकी सिलेबस में रखी गई है पूरी चीजें कवर हो रही है, कोई भी चीज छोटी नहीं है उसमें, प्लस 1-2 चीजें ज्यादा ही है, कम कुछ नहीं। ठीक है, तो सैटरडे तक जितनी चीजें पढ़ाई हैं। अभी आपको कैनोनिकल फॉर्म बताना है, कार्पेट मेथड्स बताने हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में उसके एप्लीकेशंस बनाने हैं। अभी आपको पैराबोलिक फॉर्म, इलेप्टिक फॉर्म, हाइपरबोलिक फॉर्म, s² - 4rt आपने पढ़ा भी होगा जिन्होंने, वो सारी चीजें, उनका रियल वैल्यू में उनके क्या एप्लीकेशंस हैं, ये सारी चीजें बची हैं। सैटरडे तक सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। ओके, तो सारी चीजों को मैं कवर करूंगा, और जो सॉल्व का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं साथ ही साथ नोट्स भी बनाता चल रहा हूँ। जरूरत होगी तो मैं आपको उसकी फोटो में भेज दूंगा, सॉल्व एग्जाम्पल, जो प्रॉब्लम सॉल्व करके फोटो भेज दूंगा, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप आप उसको देख के भी कर सकते हो। ठीक है? यस सर। लेकिन सर आपने असाइनमेंट से पहले हम लोग को ओडी में कुछ असाइनमेंट दिए थे जो 27 फेब तक जमा करने थे, सर वो वाले क्वेश्चंस डिस्कस कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, बिल्कुल करना। यस सर। ठीक है, ओके। थैंक यू।
थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।